Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ जयंता दास। जयंता दास जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। वार्म वेलकम जयंता। थैंक यू राजेश। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Indian economy expected to grow at 6.5% in 2023-24 fiscal, says Chief Economic Advisor Dr. V. Anantha Nageswaran. Agriculture sector witnesses average annual growth of 4.6% in over the last 6 years as per the economic survey. And domestic stocks trade flat. Sensex closes above the 59,500 mark. Nifty settles above 17,650 level. मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की संभावना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि देखी गई और घरेलू शेयर बाजारों में सपाट कारोबार। सेंसेक्स 59,500 के निशान से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 17,650 के स्तर से ऊपर पहुंचा। Chief Economic Advisor Dr. V. Anantha Nageswaram has said that Indian economy is expected to grow at 6.5% in 2023-24 and the range is projected between 6 to 6.8%. Addressing a press conference in New Delhi on the highlights of Economic Survey 2022-23, which was presented in Parliament today, Dr. Nageswaram said the country's GDP growth is expected to remain robust in financial year 2023-24. He said India's economy is poised to do better in the remainder of this decade. The survey projects the economic growth rate to be 6.5% for the next financial year, and the range we have projected for the outcomes is between 6 and 6.8%. Baseline is 6.5%, the range is 6 to 6.8%. From the Indian standpoint, a moderate to somewhat significant global economic slowdown will be on balance a better outcome because it would lead to lower commodity prices and the cessation of interest rate tightening in the developed world, weaker dollar, etc. मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.8% पर बनाए रखा है। मुद्रा कोष ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इसके 6.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी 6.8% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है, गैर बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि महामारी से उबरने की बात करने की बजाय अब हमें आगे बढ़ना होगा। The survey looks ahead to the medium term because the pandemic response and recovery phase is over. In fact, Chapter 1, the title itself says, State of the Economy, Recovery Complete. And therefore, after a long time, we have banking, non-banking and corporate sectors with healthy balance sheets and they are ready to borrow and lend and invest. So we don't have to speak about pandemic recovery anymore. We have to look ahead to the next phase of India's economic growth process. श्री नागेश्वरन ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में 10 क्षेत्रों में निजी निवेश 2021-22 की समान अवधि की तुलना में अधिक है। इनमें फार्मा, टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल और कैपिटल गुड्स शामिल हैं। Gento, the Chief Economic Advisor has said that India's economy is poised to do better
in the remainder of this decade. So what are the reasons behind this optimism? Well, I guess there are three major factors riding this optimism at this point of time. I mean, this is absolutely my personal view. It's not an official view in that sense. But typically, I believe with a fantastic recovery post-COVID, and the recovery has been fast and consistent. So taking the cue from there, obviously, the foundation from here on should be stronger. And as I said earlier, if this is on a slightly pessimistic global scenario, if you are clocking in around 6.5 to 6.8, typically the range is what the economic services, IMF also says. Obviously, there is a consistent recovery path which we are looking forward to. That's the first thing. Secondly, what I also need to understand is the domestic, specifically in the infrastructure sector, the demand flow which the government has continuously sustained. Because when the pandemic started, the government had two major objectives in mind. The first objective was to ensure that food grain is, sent to the last hungry person out there who has lost his job because of the pandemic. And both the central government along with the states have done a fairly good job. I mean, despite the severe losses of life and all, there were people who had, after the initial shock of the first 15-20 days of the pandemic and lockdown and closure, with people had to work on home after losing their jobs, at least the food grain issue was not there. So this speaks of a resilient economy. I think somewhere down the story, I think you're also speaking of our agricultural exports, which now India is in a sustained manner increasing by the hour, if not by the day. So based on these two facts and supplementing to it, the overall policy consistency of the government, where the initial thing was all things should be at a convergent level in terms of your policies, in terms of what you intend to do across ministries and departments. So that has been fairly consistent in the last few years. So given, I think, these three factors, what's important to see is the optimism which you speak of. Now, obviously, it comes in with some riders, which includes geopolitical issues which no one has control of, which includes maybe, another round of pandemic at whatever form. So these are cautious things which keep on happening without notice, which one doesn't have control on. But overall, as I said, there is a fair amount of optimism for the next 5 years of how we go from here. So you mentioned geopolitical reasons and maybe the stabilization of the interest rates, etc. In that scenario, where do you see our GDP going? Well, as I said, at this point of time, there is no use of trying to figure out whether the GDP can do 8%, 9% from here on. What we need to understand is whether we are able to be consistent in our performance. Now, there is no use of a good GDP performance followed by 3 bad years. I mean, you can spike up to 9.5% growth levels and then fall down to 5.5%, 6% levels. We don't want that. What we want at this point of time is a resilient economy which has a consistent track record in terms of growth. And even at, I guess, 7.5% levels, if we try to grow it consistently from here on, if the focus is for the next 4 to 5 years of how we are till 2030, based on the factors which I just mentioned, I think we are able to do quite well in terms of what we have set ourselves to do as a mission. But then the COVID times has been a very true testing time. It's been a learning time for governments. And as I said, the global recession also just can't be wished away. It's here to stay. It's already there, knocking at our doors. In many nations, it has entered in sort of, the only thing is governments have not announced recession. But the slowdown, the high interest rates and the loss of jobs globally in the tech sector are important triggers which just can't be wished away. But then, as I said, quoting the CEA once again, despite and in spite of all this, we have a fairly positive scenario outlook for India. जी, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है और गैर बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। ये क्या बताता है? देखिए, मुख्य स्तर से विशाल, जब भी आप देखेंगे 2-3 क्षेत्र खास करके अफेक्ट होता है जब भी इकोनॉमी में कुछ अलग से चुनौती आते हैं। उनमें से बैंकिंग क्षेत्र, खास करके फाइनेंशियल क्षेत्र अगर मोटी तौर से कहे, जिसमें बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, इनका परफॉर्मेंस, इनका बैलेंस शीट के ऊपर आकर कहीं न कहीं छवि आते हैं। हम सब ने देखा है कि पिछले 1 साल का दौरान बैंक्स, खास करके पीएसयू बैंक्स का बहुत ही अच्छा एक अद्वितीय दौर रहा मार्केट में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस।
और नॉट ओनली दिस, मैं पर्सनली हमेशा इस प्रोग्राम में लगातार पिछले 5-6 साल से हमें पूछा जाता है स्टॉक्स के बारे में, सेंसेक्स के बारे में और क्षेत्र विशेष के बारे में, तो बैंक्स हैव ऑलवेज बीन माय पर्सनल फेवरेट। और ये देखते हुए नॉट ओनली प्राइवेट क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंक का तो परफॉर्मेंस है ही बहुत बढ़िया। अगर 2-3 बैंक का टॉप बात करें, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी का, तीनों बैंक को लेके, इवन पीएसयू बैंक्स में हमारा टॉप 4 पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा लेके अगर इन 4 बैंक्स का हम बात करें, अलग भी और 2 बैंक्स हैं, तो दे आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 2 to 3 years के अंदर दे विल बी गोल्ड माइंस, स्टार परफॉर्मर्स। तो दैट इज द हेडरूम विच वी हैव इन अ बैंकिंग सेक्टर। और जैसे आपने सवाल शुरुआत की कि इस तरह का क्षेत्र में जिस तरह का गतिविधि नजर आया है, तो ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि ग्लोबल रिसेशन के साथ साथ देखिए इनका भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फर्क आएंगे, लेकिन जो बुनियादी ढांचा जो है बैंकों का कॉर्पोरेट क्षेत्र का आज का तारीख में, खास करके ब्लू चिप कंपनीज का जो हमारा ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाता है, स्टॉक मार्केट्स के वो लोग लीडर्स हैं, वो सारे कंपनीज का अगर आप पूरी तरह से अगर विश्लेषण करें, अलग से एनालिसिस करने का कोशिश करें, तो आप देखेंगे नींव बहुत ही अच्छी है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में भी अच्छी खासी मजबूती देखी जा रही है। He's also mentioned about the private investment in 10 sectors and particularly in pharma, textile, cement, chemicals and capital goods. So going forward, do you see a lot of public-private collaborations taking place? Rajesh, I am quite euphoric on the fact that the 10 sectors where investments are really picking up and catching up, these are all traditional sectors. These are not sectors like your tech or the BPO industry or the AI industry and things like that. These are traditional sectors which directly lead to jobs. And I think that's where we should see. Finally, we have all been saying it's nice to ride the services sector growth as a nation. I mean, services sector contribute over half of our GDP, we know that. But for a nation to finally sustain that growth, from inside, organically that growth has to be sustained. People should not lose jobs. Even for people who are shifting from agriculture to the, to the industrial part in terms of their work activity. And that's where the huge euphoric news comes in, which says that most of the investors, specifically private investment, has been quite, bullish in pharma, textile, cement, chemicals, capital goods. These are all heavily job-laden sectors, and these are traditionally quite intrinsically linked. And as I said, we speak of a China story, we speak of success stories of Germany, Japan and all. Most of them have focused on the manufacturing. Most of them have focused on the factories they are building, the people who are working there, the skilled workers and things like that. And I think that's where this is a second run, which I believe, after the lovely tech run of the last 2 decades, which if the private investment growth, as the economic service is, has seen some really huge interest. And I think that speaks quite well. Coming back to initial question, where does the euphoria for the next 5 years of optimism come in from? I think these are factors, exclusive factors which highlight. And also money is just not coming into your banking, finance. Money is just not coming into your, high-tech industry, IT and all. Money is coming into very, very traditional sectors. Textiles, I mean, see, this is one of the oldest sectors, and it still employs the largest number of people in terms of, wages, in terms of manpower they're employing. I mean, that's attracting huge investments. Correct. So it speaks. So in that euphoria, would you also add the renewable energy mix, which the economic advisor has also mentioned that India is well ahead of its target? See, this is a story which is happening. It's a story work in motion. And obviously, India has really gone ahead in terms of not only just renewable energy, in terms of new energy areas to be added, in terms of how to bring in a much more sustainable energy, focus into what India is doing, in connect to what our commitments have been to the global, energy objectives. Okay, moving on. The fiscal deficit is expected to be at 6.4% of the GDP in financial year 2022-23. The economic survey was presented in both the Houses of Parliament today by the Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman. The survey highlighted that conservative budget assumptions provided a buffer during global uncertainties. The resilience in the fiscal performance was due to a recovery in economic activity and buoyancy in revenues. According to the survey, gross tax revenue registered a year-on-year growth of 15.5% from April to November last year, and the net tax revenue to the centre after the assignment to states grew by 7.9% on a year-on-year
basis. A good buffer being provided during these global uncertainties. What's your take on this? See, global uncertainty is bound to happen. I mean, it's part of a cycle. You can't have 10 years of boom with no, up cycle or down cycle. What is important is for any nation is to withstand these bad days of life. So, as we say, there should be just not a fair weather strength in your economy. The economy should have an all weather strength. So, based on that, the facts which you mentioned obviously is going to see us through in a much more, rather see us through maybe is a much more positive word. I would rather use, they would supplement our fight and resistance to bad days. So, if I may put it and paraphrase it in that way. जी, फिस्कल डेफिसिट की जो बात की है इसमें आर्थिक सर्वे में, वो 6.4% फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में वित्त वर्ष में रहा है। फिस्कल डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो ये हम पिछले कई 3-4 सालों से देख रहे हैं कि 6 और 7% के बीच ही बना रहता है। इस मोर्चे पे सुधार की गुंजाइश हम क्यों नहीं? देखिए, लॉन्ग टर्म में अवश्य 4.5 से लेकर 5% के बाद एक प्रॉपर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं उसका बात हुआ था। लेकिन हमें यह समझना है आज का तारीख में चुनौती कहीं और है, और चुनौती ये है कि एक तो कोविड का प्रलेप में जो देश गुजरा है उसमें बहुत जरूरी था सरकार को एक सोशियो इकोनॉमिक फोकस ऑब्जेक्टिव ध्यान रखते हुए खर्चा करे। जैसे मैंने कहा आपको कि डिमांड क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में डिमांड को लगातार बढ़ोतरी देने के लिए, क्योंकि वहां पे नॉट ओनली जॉब्स रातों रात अगर देखें पिछले 3 साल के दौरान हमारा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क आ गया, चाहे सड़कों का बात करें, चाहे रेल का बात करें, चाहे पावर क्षेत्र का बात करें। तो ये सारे खर्चे के वजह से अगर फिस्कल डेफिसिट के ऊपर प्रेशर बेशक आते हैं, तो मैं मानता हूं कि डिमांड में अगर कुछ फर्क आता है फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत ज्यादा होने से, तो बेशक सरकार को उसका सामना करना चाहिए और उसको अलग से इसके ऊपर ज्यादा कठिनाई के ऊपर बात ना करके, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सेस फिस्कल डेफिसिट हेडरूम so that the government spending, which is very critical and has carried us through these years. I mean, it's very nice to hear the CEA say that we are not going to talk about, COVID and the recovery from COVID anymore. We are going to talk about life and क्यों हम बात करें? And that's the strength and that's the positive confidence which the government has today. कि भाई हम अब कोविड के बारे में लेके कुछ आगे से हर चीज में कोविड को जोड़ के कि भाई कोविड का खर्चा, कोविड का ग्रोथ, कोविड का टाइम में ये हमारा साथ That's behind us now. Yeah, it's looking forward from here. India's agriculture sector has been witnessing robust growth with an average annual growth rate of 4.6% over the last 6 years. The Economic Survey 2022-23 said that this has enabled agriculture and allied activities sector to contribute significantly towards country's overall growth, development and food security. It said in recent years the country has emerged as the net exporter of agricultural products, with exports touching a record over $50 billion in 2021-22. What a good news that is. Absolutely. And अगर आप देखें, एक जमाना था जब देश में हमारा चर्चा होता था जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे कि भाई अमेरिका में गेहूं इतना अलग से उत्पादन हो रहा है कि जहाज में गेहूं लेके वो समुद्र में जाके फेंकते थे, लेकिन गरीब नेशन को देते नहीं थे। तो वो पूरा हिस्सा अब पलटी होके यहाँ पे इंडिया इज नाउ फूड ग्रेन एक्सपोर्टर। तो दिस इज द चेंज विच इंडिया हैज सीन एंड ऑब्वियसली लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का तहत आज हम यहाँ आके पहुंचे हैं, उसका भी बेशक क्रेडिट सारे दुनिया देते हैं, पॉलिसीज भी देते हैं, लेकिन पिछले 5-7-10 साल के दौरान कृषि क्षेत्र में खास करके फोकस करते 4% के ऊपर कृषि क्षेत्र का ग्रोथ है जी। इस बाजार में अगर आप देखें, अभी कोविड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इस बाजार में अगर 4% के ऊपर कृषि क्षेत्र में उत्पादन का वृद्धि हुआ है और ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छा बात कह रहा है कि हमारा कृषि और हमारा किसान भाइयों ने कहां तक जाके उत्पादन में खास करके एज अ फूड सिक्योर्ड नेशन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में अगर हम कहें, तो कहां तक जाके हम उस फूड सिक्योरिटी हम अपना हासिल कर पाए, ये बहुत बहुत मतलब शाबाशी का बात है बेशक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को भारत के विकास परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण बताया है। श्री मोदी ने कहा है कि इस सर्वेक्षण में विशेष रूप से भारत के प्रति दुनिया के आशावादी दृष्टिकोण, बुनियादी ढांचे, कृषि और उद्योगों में वृद्धि तथा भविष्य में संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। और अब रुख करते हैं शेयर बाजार का। कमजोर वैश्विक संकेतों के
बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 59,500 के निशान से ऊपर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,650 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। सेंसेक्स 49 अंक बढ़कर 59,550 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 13 अंक की मामूली वृद्धि से 17,662 दर्ज हुआ। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.62% चढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.53% का उछाल दर्ज हुआ। The Sensex and the Nifty today witnessed marginal gains. Index of top 30 companies at Bombay Stock Exchange ended above the 59,500 mark. The index of the top 50 companies at the National Stock Exchange settled above the 17,650 level. Both stocks rose even as the cues from global markets were negative. The Sensex rose 49 points to finish at 59,550 and the Nifty 50 also added 13 points to end at 17,662. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 1.62% and the small-cap index surged 2.53%. In the Sensex pack, 15 companies posted gains while 15 witnessed losses. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it rose 3.5%, followed by Ultratech Cement which gained 3.1%. Power Grid added 3% and SBI Bank ended 2.9% up. On the other hand, TCS and Bajaj Finance both slipped 2.3% each, followed by Tech Mahindra which declined 2%. Sun Pharma fell 1.5%. In sectoral indices at BSE, 15 sectors gained while 5 logged losses. Service sector index gained 2.3% and utilities added 2.2%. Industrial and telecom, both sectors surged 2.1% each. On the other hand, energy and oil and gas, both sectors tumbled 0.9% each. IT and tech, both indices plunged 0.7% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,373 companies gained while 1,133 fell. Shares of 115 companies remained unchanged. Jayanta, how do you view the performance of the market today? Well, obviously, pre-budget, always the market has been a bit, if not nervous, a bit choppy and a bit inconsistent. In addition to that, January, traditionally, if you check out last 10 years of data, January also has been inconsistent in terms of performances with mostly investors, foreign international investors pulling out their money and things like that. What I believe is sectorally, if you need to have a focus, then as I said earlier, have a middle term focus. There is not much to do in the short term in this market. For the reason being is the inconsistency in the global markets would be a dominating factor in the next 4 to 6 weeks to 8 weeks. So don't look at a short term market over here. Wait for the budget to come out. Try to figure out the impact sectors in the budget which can create at least a middle term opportunity for you to invest. And taking a cue from there, remain invested in blue chips, because the story you read earlier about the 10 traditional sectors where investments are coming in, it's important to understand that this is a market, given that global recession is actually going to come in this year and is going to stay for a while, it's important to understand that you remain invested in safe stocks. And when I say safe stocks, doesn't mean stocks which are going to give you return, but at least will not lead to high losses overnight. जी, मिड कैप इंडेक्स में आज 1.62% का उछाल आया और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.53%। ये इतना जबरदस्त उछाल मिड कैप और स्मॉल कैप में ये क्या बताता है? देखिए, खास करके मैं मानता हूं स्मॉल कैप मिड कैप में इनकंसिस्टेंसी और स्विंग कुछ ज्यादा गहरा रहा और जिस वजह से आज उछाल भी अलग से मौजूद हुए कंपेयर टू व्हाट सेंसेक्स परफॉर्मेंस हैज बीन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दोहराया, फिर से मैं दोहराऊंगा, खास करके स्मॉल कैप क्षेत्र में, मिड कैप्स तो चलिए फिर भी यू कैन गेट सेफ स्टॉक्स, स्मॉल कैप में वन हैज टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, क्योंकि इसमें उछाल जितना आपका तेजी से आएगा, गिरावट अगर आप देखें लगातार पिछले 3-4 दिन का दौरान जिस तरह का गहराई में जाके गिरावट हुआ है स्मॉल कैप मिड कैप में, वहां पे क्षेत्र विशेष स्टॉक्स में उछाल होते हैं, ब्रॉड बेस जो उछाल है अगर आप कहें अलग से, वो बहुत कम नजर आता है। क्योंकि जो दिक्कतें मेन खास करके खुदरा निवेशकों होते हैं कि भेड़ चाल का दौर में क्या होता है कि स्मॉल कैप इंडेसेस या मिड कैप इंडेसेस या इवन सेंसेक्स का जो स्टॉक्स है
उस स्टॉक्स का मूवमेंट देख के लोग जाके कुछ और कंपनी में जाके निवेश करते हैं, सोच रहे हैं कि वहां पे भी शायद अलग से आएंगे। ये ब्रॉड बेस रैली नहीं है। मतलब बार बार मैं कह रहा हूं, पूरा जनवरी का दौरान जितना बार हम प्रोग्राम किए हैं, दिस इज नॉट अ रैली विच इज हैपेंड इन द ब्रॉड बेस मार्केट। अगर आप थोड़ा सा खुरद के देखेंगे, थोड़ा सा सेंसेक्स स्टॉक्स या इंडिसेस स्टॉक से हटके अगर आप ब्रॉड बेस मार्केट में देखेंगे, द लॉसेज हैव बीन क्वाइट सीवियर। तो उस हिसाब से मैंने शुरुआत में जैसे मैंने कहा, स्टिक टू ब्लू चिप कंपनीज, स्टिक टू कंपनीज विच यू नो ऑफ। पड़ोसी को सुन के, ऑफिस का कोलीग को सुन के, या कोई भी पेपर में कहीं पे मीडिया में इंटरनेट पे टिप्स देख के आंख बंद करके निवेश ना करें इस मार्केट में। वी आर हेडिंग फॉर स्टॉर्म्स इन द मार्केट। अगले 6-8 महीना मार्केट के लिए उतना अच्छा सिचुएशन नहीं होने वाला है। Tomorrow is going to be a very crucial day. We have the union budget, and of course we have the Fed's decision on interest rates also coming in tomorrow. Exactly. So what are you expecting? See, I mean, they are expecting a short jump once again, not a hawkish move from here on, because from here till next March, I think another 50 to 100 basis points is what the Fed expects to, jack up the interest rates. So what are your expectations from the budget, briefly? In terms of very briefly, well, this is one of the major budgets going to happen before the elections, 2024. I mean, there will be another budget before that also, but that will not have much headroom in terms of its policy impact. So we look forward to an important budget in terms of at least a policy and a political impact, keeping the elections in mind. किन क्षेत्रों पे फोकस रह सकता है वित्त मंत्री का? देखिए, निजी क्षेत्र में तो ऑब्वियसली अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में एक इम्पेटस का बात रहेगा, लेकिन मार्केट में जिस तरह का बात चल रहा है, आम जनता, आप हम जैसे लोग, हमारा श्रोता जैसे लोग, उनका फोकस ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में जो वृद्धि का बारे में बात किया जा रहा है, विशाल बहुत खुश लग रहा है अभी से ही। तो हम उम्मीद करते हैं ये खुशी बरकरार रहे हमारा सबका। तो इसमें जरूर ये है कि जो टैक्स का जो सेविंग्स जो होने वाला है, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, अगर उसका अनाउंसमेंट आ जाता है तो एटलीस्ट फॉर द कॉमन मैन एक राहत बेशक इसमें आएगा। और अब रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। वैश्विक शेयर बाजारों में आज गिरावट रही। एशियाई शेयर बाजार भी नुकसान के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% लुढ़क गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 1% की गिरावट दर्ज हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, जापान का निकेई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स तीनों 0.4% के नुकसान में रहे। यूरोपीय शेयर बाजार भी अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान गिरावट में चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 0.8% के नुकसान में चल रहा था। जर्मनी का डैक्स 0.7% और फ्रांस का कैक 0.6% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। Major U.S. stock indices declined yesterday amid fall in technology and other mega cap shares. Investors look towards a major week of events, including central bank meetings and earnings report. The Dow Jones Industrial Average fell 0.8%, the S&P 500 declined 1.3%, and the Nasdaq Composite Index plunged 2%. Is Fed going to be harsh, polite? Well, I think in these days, if they increase rate of interest as per market expectation, it's supposed to be a soft move in that sense. Harsh will be if you go beyond what the markets are expecting, and it will be really hard blow. Moving on, the oil prices today fell as the prospect of further interest rate increased and ample Russian crude flows outweighed demand recovery expectations from China. In intraday trade, Brent crude was trading at $83.95 per barrel, while the WTI crude prices were at $76.85 per barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने की कीमतों में 30 रुपए की गिरावट रही। फरवरी आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 56,750 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,920.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी गिरावट से $23.25 प्रति औंस पर चल रही थी। Jayendra, thank you so much for being with us and discussing various stories. And before we close, the headlines once again. Indian economy expected to grow at 6.5% in 2023-24 fiscal, says Chief Economic Advisor. Agriculture sector witnesses average annual growth of 4.6% in over the last 6 years as per the economic survey. And domestic stocks trade flat. Sensex closes above the 59,500 mark. Nifty settles above 17,650 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.